हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर सौरव सर क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं आईएसएस मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का पेपर 3 जो रिसेंट एग्जामिनेशन हो गया है, उसी पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारे तरफ से कोई क्लास की ज़रूरत है, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, एनी ऑफ दैट, प्लीज डोंट हेजिटेट, प्लीज कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। डॉक्टर सौरव सर सिंसियरली रिप्लाई टू योर क्वेरी इंडिविजुअली थ्रू व्हाट्सएप। तो आपको सभी को तो पता ही है, आप लोगों के लिए हम ही लोगों सबसे पहले यूट्यूब में ये इस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करके प्रॉपर एक्यूरेट सॉल्यूशन करके ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। अगर आप में से कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है और आईएसएस नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग इस कोर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। So don't waste time. This is the best time to take admission in Dr. Sourav's classes and boost up your preparation with Dr. Sourav sir. So let's start with question number 7C. Question number 7C इसमें क्या बोला गया है? Find the first three autocorrelation coefficient of the following moving average process. xt equals to 16 et in plus minus 0.8 et minus 1 and plus 0.4 et minus 2 minus 0.2 et minus 3, where et are the independent and identically distributed. That means IID IIT. Okay, so each with normal distribution having mean 0 and same variance. How can I find this? So let follow this step. First we can identify the coefficient. What is the coefficient? Theta naught. Theta naught means 1.6 and theta 2 is, what is theta 1? Minus 0.8. What is theta 2? 0.4 and theta 3 is minus 0.2. Comparison, only these coefficient values are theta 1, theta 2. Okay, and next we find the autocorrelation function ACF, autocorrelation function. So the autocorrelation function for a moving average process of order Q MAQ, moving average process means MA of Q is 0 for lags greater than Q. Greater than Q. Here we can have an MA moving average. What is the number? 3 MA3 process. So the autocorrelation for lags greater than 3 are 0. Lags greater than 3 are 0. So the ACF formula for MAQ, ACF means autocorrelation function. ACF formula for MAQ, the MAQ process, the autocorrelation function PK at lag K is given by PK at lag K, lag K is defined by this is not PK, rho K. Autocorrelation function is rho K. Rho K equals to summation of Kj equals to 0 Q minus K J equals to 0 Q minus K theta j plus theta j plus K divided by 1 plus summation of j equals to 1 to Q j equals to 1 to Q
theta j square, theta j square. And let's calculate the first three autocorrelation coefficient. What is the autocorrelation coefficient is for lag 0, for lag 0 rho naught equals to 1. For lag 1, that means rho 1 equals to 1.6 into minus 0.8 plus minus 0.8 into 0.4 plus 0.4 into minus 0.2 divided by 1 plus minus 0.8 square plus 0.4 square plus minus 0.2 square. For lag 2, here rho 2 is for lag 2 here rho 2 is 1.6 into 0.4 plus minus 0.8 into minus 0.2 divided by 1 plus minus 0.8 square plus 0.4 square plus of minus 0.2 square. So what is the confidence of lag 3? That means rho 3. The result is 1.6 into minus 0.2 divided by 1 plus minus 0.8 square plus 0.4 square plus minus 0.2 square. Okay, so what is the denominator part here? The denominator part in all of that, denominator part is 1 plus minus 0.8 square plus 0.4 square plus minus 0.2 whole square. That means 1 plus 0.64 plus 0.16 plus 0.04. Okay, so after calculating this, the value is 1.84. So in numerator part for row 1, in numerator part for row 1, what is the value here? In numerator part for row 1, the value is here. After calculating this, the value is minus 1.28 minus 0.32 divided by minus 0.0
minus 0.08, and the denominator part is 1.84. so what is the result? The result here is, after calculating this part, the result is minus 0.913. okay, and in second part we calculate that in P2 the result is 0.64 plus 0.16 divided by 1.84. that means 0.80 divided by 1.84. that means the result is 0.43, 0.435. and what is the result of for row 3? the calculation is here minus 0.32 divided by 1.84. so the result is minus 0. Near about 174. so what is the correct answer for first three autocorrelation coefficient is the row 1 value is minus 0.913, row 2 value is 0.435, and row 3 value is minus 0.174. so this is the correct answer for this question. ओके तो आज के लिए इतना ही. ऐसे ही बहुत सारा वीडियो को जानकारी के लिए और ऐसे ही बहुत सारा वीडियो आप देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट क्लिक ऑन द बेल आइकॉन. That's all for today. We'll meet you next session soon. Thank you, champs.